गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है बॉयकॉट ऑफ G20 समिट बाय द यूएस। टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि यूएस जो है वो G20 के फॉरेन मिनिस्टर्स मीट को जोहानिसबर्ग में अटेंड नहीं करेगा, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका है वो डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन और क्लाइमेट चेंज के एजेंडा को पुश कर रहा है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी साउथ अफ्रीका को अक्यूज़ किया है कि वो कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स को मिसट्रीट करते हैं और लैंड कॉन्फिस्केशन करते हैं। ठीक है, तो मार्को रूबियो की जो डिसीजन है वो एक्चुअली जो लिंक्ड है वो साउथ अफ्रीका ने जो जेनोसाइड का केस किया है अगेंस्ट इसराइल एट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और प्रोमिनेंट रिपब्लिकन लीडर्स ने भी कंडेम किया है आईसीजे को कि वो इसराइल के अगेंस्ट बायस है। तो उन्होंने इवन सैंक्शंस भी लगाने को कहा है उन कंट्रीज़ के अगेंस्ट जो आईसीसी के अरेस्ट वारंट्स अगेंस्ट इजरायली लीडर्स इशू करेंगे। तो साउथ अफ्रीका ने जो है और मलेशिया ने एक कैंपेन चलाया कि आईसीजे और आईसीसी की रूलिंग्स को प्रोटेक्ट किया जाए, और उन्होंने एक 9 नेशन हेग ग्रुप बनाया जो पैलेस्टीनियन राइट्स और को डिफेंड करेगा, और जो यूएस का जो अटैम्प्ट्स है वीकन करने को इंटरनेशनल कोर्ट्स को उसको चैलेंज करेगा। तो ड्यूरिंग फर्स्ट टर्म भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने स्वीपिंग सैंक्शंस लगाए थे आईसीसी के ऊपर। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने लेकिन वो रिवर्स कर दिए थे। यूएस ने जो है वो सपोर्ट दिया है कि आईसीसी को कैसे वीकन किया जाए, खासकर तब जब इजरायली और हमास लीडर्स के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट निकाले हैं आईसीसी ने। तो इवन इवन जो यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने भी न्यू आईसीसी सैंक्शंस बिल पास किया जो अभी सेनेट रिव्यू के अंडर है। जो रूबियो का क्रिटिसिज्म है वो साउथ अफ्रीका के एज अ G20 चेयर की तरफ डायरेक्ट हो रहा है, लेकिन इससे ये कंसर्न्स रेज होते हैं कि यूएस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी कमिटमेंट कितनी है मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। साउथ अफ्रीका जो है अभी G20 प्रेसिडेंसी होल्ड कर रहा है, और जो है नवंबर में ट्रंप को अटेंड भी करना है वो G20। बट अगर ट्रंप उसे अटेंड नहीं करेंगे तो यूएस जो है उनकी पार्टिसिपेशन एट मल्टीलैटरल फोरा जो है वो क्वेश्चन होगी। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसीज़ में जो है पहले भी हमने देखा फर्स्ट टर्म में भी कि G20 में फ्रिक्शन आया था, और सेकेंड टर्म में भी ऐसा ही डी प्रायोरिटाइज कर सकते हैं G20 को ट्रंप। इंडिया जो है G20 को एज अ मोर इफेक्टिव प्लेटफॉर्म देखता है दैन यूएन, और जब इंडिया ने G20 प्रेसिडेंसी अपनी 2023 में होल्ड की थी तो इंडिया एक एज अ ब्रिज बना था ग्लोबल नॉर्थ और साउथ के बीच में। अगर यूएस स्किप कर देता है साउथ अफ्रीका की G20 समिट को या फिर उससे विड्रॉ कर लेता है तो उससे जो है ग्रुप वीकन होगा, और चाइना और रशिया का इन्फ्लुएंस उसमें बढ़ जाएगा जो कि इंडिया की स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के को कॉम्प्लिकेट कर सकता है। कुछ एनालिस्ट का ये भी कहना है कि जो मार्को रूबियो हैं वो एक प्रेशर टैक्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो नेगोशिएशंस चाहते हैं साउथ अफ्रीका से बिफोर यूएस जो है वो G20 में पार्टिसिपेट कर सके। तो ये ट्रांजैक्शनल ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इंडिया के रोल को भी एज अ ग्लोबल साउथ लीडर नहीं देखेगी अगर उनको अपने इंटरेस्ट सिक्योर करने होंगे तो। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्रेट स्कीम। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं 4 स्टार्टअप्स को, उनको ग्रांट दी जाएगी, ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेटर्स एंड टेक्निकल टेक्सटाइल्स, जिसका नाम है ग्रेट स्कीम। ग्रेट स्कीम को 2023 में लॉन्च किया गया था तो एक स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने के लिए टेक्निकल टेक्सटाइल्स में इंडिया में। तो ये इवॉल्व हुई है एज अ रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन कंपोनेंट नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन के अंडर। तो यंग इनोवेटर्स, साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट या स्टार्टअप वेंचर्स को जो टेक्निकल टेक्सटाइल्स की फील्ड में काम कर रहे हैं उन्हें अपने प्रोडक्ट्स को कमर्शलाइज करने में हेल्प करती है। तो जो इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स या स्टार्टअप्स हैं वो अपने फंक्शनल प्रोटोटाइप्स या जो उनकी टेक्नोलॉजीज हैं उनको कमर्शलाइज कर सकते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल्स के कंटेक्स्ट में। तो उनको ग्रांट इन एड दी जाती है 50 लाख रुपीज़ तक अप टू अ पीरियड ऑफ 18 मंथ्स। ओके, तो नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन है क्या, इसको लॉन्च किया गया था कि पेनिट्रेशन लेवल ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स जो है इंडिया में बढ़ाई जा सके और इंडिया को एज अ ग्लोबल लीडर बनाया जा सके उसमें। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है और सैंक्शंस इम्पोज किए हैं आईसीसी के ऊपर, क्योंकि आईसीसी जो है वो इसराइल के ऊपर इन्वेस्टिगेशंस कर रहा है। तो आईसीसी ओनली परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल है जिसको 2002 में इस्टेब्लिश किया गया था अंडर रोम स्टैच्यूट।
आईसीसी इन्वेस्टिगेट करता है जहाँ भी ज़रूरत पड़े और ट्राई करता है उन इंडिविजुअल्स को जो जिन्होंने ग्रेवेस्ट क्राइम्स ऑफ कंसर्न इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो है वो कमिट किए हैं, जैसे कि जेनोसाइड, वॉर क्राइम्स, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड क्राइम ऑफ एग्रेशन। ये कोर्ट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है। ये नेशनल कोर्ट्स को रिप्लेस नहीं करता बल्कि कॉम्प्लीमेंट करता है। 125 मेंबर कंट्रीज इसके जो हैं वो मेंबर्स एक्चुअली और पार्टीज़ हैं, और चाइना, इंडिया, इसराइल, रशिया और यूएस जैसी कंट्रीज इसके मेंबर्स नहीं हैं। ये कोर्ट जो है वो फंडेड है इंटायरली बाय स्टेट पार्टीज़ के कंट्रीब्यूशन और बाय वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल्स, कॉरपोरेशंस और बाकी के एंटिटीज़। तो इसमें जो जजेस हैं वो 18 होते हैं, हर डिफरेंट मेंबर कंट्री से आते हैं, नॉन रीन्यूएबल 9 ईयर टर्म्स के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। एक प्रेसिडेंसी होती है इसमें जो कि 3 जजेस की होती है जो आपस में इलेक्ट किए जाते हैं फ्रॉम अमंग द जजेस। ओके, तो जो जुरिस्डिक्शन है आईसीसी की वो इंडिविजुअल लेवल पर होती है, मतलब कि जैसे आईसीजे जो है वो 2 स्टेट पार्टीज़ के बीच में केसेस देखता है, आईसीसी जो है वो प्रोसिक्यूशन ऑफ इंडिविजुअल्स को देखता है। आईसीसी सिर्फ तभी कॉम्पिटेंट होता है किसी भी केस को हेयर करने में जब कंट्री जहाँ पर ऑफेंस किया गया है वो आईसीसी का पार्ट है, या फिर जो परपेट्रेटर है जो उसकी कंट्री ऑफ ओरिजिन है वो अगर आईसीसी का पार्ट है, या फिर अगर नेशनल कोर्ट जो है वो अनेबल है कुछ एक्शन लेने में, तब भी आईसीसी एक्टिव हो सकता है। और आईसीसी की जो जुरिस्डिक्शन है वो सिर्फ उन्हीं ऑफेंसेस पर एप्लीकेबल है जो रोम स्टैट्यूट 2002 के साइन होने के बाद किए गए हैं। आर्टिकल 2 जो है रोम स्टैट्यूट का वो आईसीसी के रिलेशनशिप को विद यूएन भी गाइड करता है, और कोर्ट जो है उनका एक कॉपरेशन एग्रीमेंट है यूएन के साथ, जबकि वो यूएन की मेंबर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्रामीण क्रेडिट स्कोर। टॉपिक सोशल इश्यूज इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है उन्होंने अनाउंस किया है ग्रामीण क्रेडिट स्कोर यूनियन बजट में। ये फॉर्मलाइज करेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप के ट्रांजैक्शंस को विद इन द सेंट्रल क्रेडिट सिस्टम ऑफ इंडिया, ताकि उन्हें अलाउ किया जा सके कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उनकी क्रेडिट वर्दिनेस को असेस कर सकें। तो इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। उनको मच नीडेड सपोर्ट दिया जाएगा कि वो कैसे अपने आप बिजनेसेस को बिल्ड कर सकते हैं। और ये स्कोर जो है वो एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट रिप्रेजेंट करेगा क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ मिलियंस ऑफ वुमेन जो इन्वॉल्व हैं एसएचजीज में अक्रॉस इंडियाज़ रूरल एरियाज़ वो एनालाइज करने में। ठीक है, तो उनके लिए जो है न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होंगी रूरल वुमेन के लिए, और कस्टमाइज फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स दिए जाएंगे। तो मतलब जो है कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड्स जैसे माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए वो उन्हें अवेलेबल करवाए जा सकेंगे। फिर जो एग्जिस्टिंग गैप्स हैं हमारे करंट क्रेडिट ब्यूरो सिस्टम में जो कि ओवर लुक कर देते हैं एसएचजी मेंबर्स को, वो भी ब्रिज हो सकेंगे। फिर विमेन लेड एसएचजीज जो हैं उन्हें वो बेटर कंट्रीब्यूट कर पाएंगी अपने हाउसेज में जब उनको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी। तो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कंजर ट्राइब्स। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक टीनेज मेंबर है कंजर नोमैडिक ट्राइब के, उनको जो है वो मार दिया गया फेलो ट्राइब मेंबर्स द्वारा। तो एक कंजर ट्राइब एक नोमैडिक ट्राइब है नॉर्थ इंडिया और पाकिस्तान की। मोस्ट कंसनट्रेटेड है ये फर्टाइल और मोर डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ इंडस रिवर वैली एंड पंजाब। कोई एक्यूरेट डेमोग्राफिक या सेंसस इन्फॉर्मेशन नहीं है इनके बारे में, और ये कोई लैंड या परमानेंट शेल्टर्स को ओन भी नहीं करते हैं, ये सिर्फ ट्रैवलिंग के थ्रू ही सर्वाइव करते हैं। हिस्टोरिकली एसोसिएटेड रहे हैं ऑक्यूपेशंस जैसे कि हंटिंग, फिशिंग, बास्केट वीविंग और एंटरटेनमेंट के साथ। कांजर जो है वो फ्लुएंट है कई लैंग्वेजेस में। उनकी खुद की लैंग्वेज कांजरी जो है उसकी इंडो आर्यन, प्रकृत और रोमानी रोमानी जो है लैंग्वेजेस के साथ जो है वो एफिनिटीज़ हैं। चक्री जो है इनका मोस्ट पॉपुलर फोक डांस है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जेवंस पैराडॉक्स। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस सॉरी सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो माइक्रोसॉफ्ट सीईओ जो हैं उन्होंने डिस्कस किया है जेवंस पैराडॉक्स, जो ये नोट करता है कि जो है इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी अगर आएगी एआई में तो उससे डिमांड भी जो है वो इम्प्रूव होगी और एक वो कॉमोडिटी बन जाएगा। तो जेवंस पैराडॉक्स एक आइडिया है जो कि कहता है कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो है अगर किसी रिसोर्स को चीपर बनाती है और एफिशिएंट बनाती है यूज़ में, तो उससे उसकी डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये एक तरह से होता है कि जब आप एफिशिएंसी लेके आते हो किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इम्प्रूवमेंट लेके आते हो उसकी यूज़ में, तो उससे जो है उसकी कंजम्पशन इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे कि जेवंस जो हैं जिन्होंने ये पैराडॉक्स दिया है, उन्होंने कहा है कि अगर आप जैसे उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि कोल जो है
उसको जब आपने एफिशिएंट यूज़ उसका करना शुरू किया और टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो लोगों ने ज़्यादा कोल को यूज़ करना शुरू किया, कोल की एक्सट्रैक्शन बढ़ गई और कंजम्पशन भी बढ़ गई। तो यही जो है व्हीकल के कंटेक्स्ट में भी आप देख सकते हो कि व्हीकल की अगर फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाती है तो लोग ज़्यादा उसकी कंजम्पशन करना शुरू कर देते हैं, कार ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट जब होती हैं, ठीक है, तो अफोर्डेबल बन जाती हैं वो इंडिविजुअल्स के लिए, तो वो ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर देते हैं उसे। ऐसे ही डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ भी जो हैं वो जितनी ज़्यादा उसकी पेनिट्रेशन बढ़ रही है, जितनी ज़्यादा वो एफिशिएंट हो रही है, सस्ती हो रही हैं, तो लोग उसकी कंजम्पशन भी ज़्यादा कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पिनाका MLS। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली साइन किए हैं कॉन्ट्रैक्ट्स वर्थ 10,000 करोड़ प्लस एमिनेशन प्रोक्योर करने के लिए आर्मी के, पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स भी। तो ये पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम बैटल प्रूवन ऑल वेदर इनडायरेक्ट एरिया फायर आर्टिलरी वेपन सिस्टम है, जो डेवलप किए गए हैं DRDO के आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा। इसको सबसे पहले यूज़ किया गया था ड्यूरिंग कारगिल वॉर। तो ये क्विक रिस्पॉन्स और रिलेटिवली हाई पॉइंटिंग एक्यूरेसी है इसकी, और ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ फायर अगेंस्ट क्रिटिकल एंड टाइम सेंसिटिव एनिमी टारगेट्स पर ये लॉन्च कर सकते हैं विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। हर लॉन्चर जो है उसमें 12 रॉकेट्स होते हैं, एक बैटरी होती है जिसमें 6 लॉन्चर्स होते हैं, ठीक है, 72 रॉकेट्स मतलब टोटल बन जाते हैं। तो इसकी लगभग 75 किलोमीटर तक की रेंज है, और पिनाका गाइडेड जो वर्जन है वो INS या GPS नेविगेशन का यूज़ करके प्रिसीजन स्ट्राइक करता है, और ये माउंटेड होता है एक टाटा ट्रक पर मोबिलिटी के लिए। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is boycott of G20 summit by the US. This topic is important for your international relations. So US Secretary of State Marco Rubio has announced that he will not be attending the G20 foreign ministers meeting in Johannesburg, and because he has criticized South Africa for using the summit to push diversity, equity, inclusion, and climate change agenda under the guise of solidarity and sustainability. Even the President Donald Trump has accused South Africa of land confiscation and mistreating certain groups, and he has vowed to cut future funding until an investigation is conducted. So, Marco Rubio's decision to skip the G20 meeting is primarily stemming from the South Africa's decision to launch the genocide case against Israel at the International Court of Justice. So, prominent Republican leaders have also condemned the ICJ, calling it biased against Israel. They have even threatened sanctions against countries which support potential ICC arrest warrants for Israeli leaders. So, I, America has been critical of ICC. So, in response to that, South Africa and Malaysia, they have launched a campaign to protect ICJ and ICC rulings, forming the nine-nation Hague Group to defend Palestinian rights and challenge the US attempts to weaken international courts. Okay, so how the US has moved to undermine the Hague courts. So President Trump during his first term imposed sweeping sanctions on the International Criminal Court. Biden administration later reversed these sanctions, but the US support for the ICC weakened after the court sought arrest warrants against both Israeli and Hamas leaders. In response to that, the US House of Representatives passed new ICC sanctions bill, which is now under the Senate review. So while Rubio's criticism appears directed at South Africa's G20 chair, but it raises concerns about US administration's commitment to the multilateral platforms. So we all know that South Africa currently holds the G20 presidency until November 2025, and it is supposed to host the Leaders Summit also in November, in which the President Trump is also going to is expected to attend. But during the first term, Trump's America First policies led to friction within G20, and and he also sought to reshape its agenda. The second term will be no different. It could see Trump deprioritizing the G20, undermining cooperation within the group. India has positioned the G20 as a more effective platform than the UN also. And when India hosted the G20 presidency in 2023, Biden administration backed it, and India was seen as a bridge between global North and South. If the US skips the South Africa G20 summit or withdraws entirely, it would weaken the group, and it would increase the Russian and Chinese influence in that group,
which would complicate India's strategic interests. But some analysts are also saying that Rubio's tweet could be a pressure tactic, uh, which means that US is willing to, US wants, in fact, South Africa to go for negotiations. So it's kind of a tactical negotiation. So a transactional Trump administration may not even value India's role as a global South leader in the future. So we have to prepare for that. Okay. So the next topic is Great Scheme. This topic is important for your economy section. So recently, the central government has approved four startups with uh, grant for research and entrepreneurship across aspiring innovators in technical textiles scheme. That is the Great Scheme. So it was launched in August 2023 with the aim to develop the startup ecosystem in technical textiles in India. So it has evolved under the research and development and innovation component of the National Technical Textiles Mission. It encourages young innovators, scientists, technologists, and startup ventures in the field of technical textiles to translate their ideas into commercial technologies or products and make India self-reliant. It supports individual entrepreneurs or startups for functional prototypes or commercialization of their technologies for technical textiles. So, a grant in aid of up to 50 lakh rupees for a period of up to 18 months will be provided. So, what is the National Technical Textiles Mission? It was launched to increase the penetration level of technical textiles in India while leveraging the extraordinary growth rate of the sector. The mission aims to position India as a global leader in technical textiles. Okay, so the next topic is International Criminal Court. This topic is important for your international relations. So US President Donald Trump has recently signed an executive order imposing sanctions on the International Criminal Court over investigations of Israel. So, what is ICC? It is the only permanent international criminal tribunal which was established in 2002 by an international agreement called the Rome Statute. So, ICC investigates and wherever required, it warrants and tries individuals who have been charged with gravest crimes of concern to the international community, like genocide, war crimes, crimes against humanity, and crimes of aggression. As a court of last resort, it seeks to complement and not to replace the national courts. There are 125 member countries who are parties to it, but China, India, Israel, Russia, and US are not party to the ICC. The court is funded by contributions from state parties and by voluntary contributions from governments, international organizations, individuals, corporations, and other entities. So it consists of judges, 18 judges, each from a different member country, elected to non renewable 9 year terms. Then we have this presidency, which consists of three judges elected from among the judges. The jurisdiction of ICC consists of cases in which prosecution of individuals are concerned, whereas the ICJ handles dispute between the states. ICC is only competent to hear a case if the country where the offense was committed is party to the ICC, or the perpetrator's country of origin is party to the ICC. The ICC may exercise its jurisdiction if the national court is unable or unwilling to do so. The ICC only has jurisdiction over offenses which have been committed after the ICC's entry into force. Okay. Article 2 of the Rome Statute provides for ICC's relationship with the UN. While not a UN organization, the court has a cooperation agreement with the UN. Okay. So the next topic is Grameen Credit Score. This topic is important for your economy section. So recently, Finance Minister of India has announced Grameen Credit Score Scheme in Union Budget 2025. This aims to formalize self-help group transactions within the central credit system of India so as to allow leading financial institutions to better assess the credit worthiness of these bodies or self-help groups. So the objective behind the scheme is to promote financial inclusion for self-help groups, women entrepreneurs, so as to provide them with much needed support to grow in life by trying to build businesses. So this is a significant shift in analyzing the credit worthiness of millions of women who are involved in the SHGs across India's rural areas. So this will open up financial opportunities for rural women. They will be given customized credit cards for micro enterprises,
and this will also bridge existing gaps in the current credit bureau system, which often overlooks SHG members. With increased credit availability, women led SHGs will be in a position to better contribute more effectively to their houses. Okay. So the next topic is Kanjar tribes. This topic is important for your social issues. A teenage member of the Kanjar nomadic tribe was beaten to death by his fellow tribe members in East Champaran district of Bihar. So Kanjar tribe is they are a nomadic tribe of North India and Pakistan. They are most concentrated in the fertile and more densely populated areas of the Indus River Valley and Punjab. There is no accurate demographic or other census information on Kanjar in either country. They own no land or permanent shelters. They survive by traveling from community to community through diverse regions. They have historically been associated with occupations like hunting, fishing, basket weaving, and entertainment. Kanjar are fluent in several languages and many regional dialects of Hindi, Urdu, Punjabi, and Sindhi. Their own language, Kanjari, has affinities with Indo-Aryan Prakrit and Romani language. Chakri is one of the most popular folk dances of the Kanjar tribe. Okay, so the next topic is Jevons paradox. This topic is important for your social issues. Microsoft CEO Satya Nadella has discussed about Jevons paradox, which is through which he has noticed that improved efficiency in AI may boost its demand and make it a commodity. So Jevons paradox is the idea that technological progress makes a resource cheaper and more efficient to use, which often leads to increasing demand for that resource. This refers to a form of induced demand wherein efficiency improvements in the use of a resource causes increased consumption of that resource. Okay, so as this was proposed by an economist called William Stanley Jevons, so this uh, paradox is named after him. So he observed that efficient use of coal made possible by technology actually caused more coal to be extracted and consumed rather than allowing the preservation of existing reserves. So this can be applicable on other areas as well, like when cars become more fuel efficient, the consumption of the cars also increase because the cost of driving decreases. It makes it affordable for individuals to use their vehicles, so they start driving more vehicles. Okay, or they it this increases the vehicle miles traveled also. Okay. Similarly, the rise of digital technology and internet has brought numerous benefits to society. Okay, and it has increased, despite the fact that it has increased energy consumption, the use of digital resources has also increased. Okay, so the next topic is Penaka MLRS. This topic is important for your security section. So Union Defense Ministry has recently signed contracts worth 10,000 crore plus rupees for a variety of ammunition for Army's Penaka multiple rocket launch systems, which is a battle-proven all-weather indirect area fire artillery weapon system, which was developed by DRDO's Armament Research and Development Establishment. It was first used during the Kargil War, where it successfully neutralized Pakistan Army positions on the mountain tops. So the quick response and relatively high pointing accuracy of the launcher enable it to deliver a large volume of fire against critical and time sensitive enemy targets within a very short time. So each launcher consists of 12 rockets and a battery consists of 6 launchers. So basically 72 rockets in total. It has a range of about 75 kilometers. Initially unguided, but now the Pinaka unguided version uses INS or GPS navigation for precision strikes. The system is mounted on a Tatra truck for mobility. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now with new topics. Until then, goodbye and take care.